accountability, and dignity. Ladies and gentlemen, innovation and technology are indispensable allies of modern governance. AI-enabled legislative research, digital documentation, and e-parliament system can enhance transparency, efficiency, and public engagement. Open data governance and digital citizen platforms strengthen democratic accountability by bringing parliaments closer to people. Accountability is the cornerstone of democratic legitimacy. Effective oversight committees empowered with research capacity, accurate data, and institutional independence ensure the government remains answerable to the people and uphold the highest standards of governance. Distinguished delegates, federalism and power sharing are crucial for unity and equitable development. Balanced authorities between federal and provincial ties strengthen cohesion, respects diversity, and promotes stability. Cooperative governance and inter-parliamentary coordination are essential tools for national harmony. Parliaments also play a crucial role in advancing peace at the regional and global level. They must champion humanitarian principles, protect political rights, and advocate for peaceful resolution. Pakistan reiterates its unwavering support for the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, whose right to self-determination is firmly rooted in the UN Security Council resolutions. Likewise, the humanitarian tragedy in Gaza calls for urgent global action based on justice, dignity, and human rights. Ethical leaderships, transparency, and modernization are the hallmarks of enduring democratic institutions. Integrity in public office is non-negotiable. Transparent lawmaking, the active citizen engagement, strengthen trust and reinforces the legitimacy of democratic system. As we look to the future, our parliaments must become more representative, more innovative, and more accountable than ever before. The trust of the people is our greatest democratic asset and must guide every policy, every reform, and every action. Let us move forward together, committed to cooperation, peace, and democratic process. Let us build parliament and an inclusive technological advances ethically, grounded and dedicated to justice. It is not merely our responsibility, it is the legacy we owe to the future generations. I must also please bring to your attention that the most difficult job in Pakistan, I think, is the duty of the speakers. It is either the government criticizing for giving more time to the opposition, or the opposition claiming that they have not been given enough time. So I feel sorry for my honorable colleagues. I don't have such problems as much as most of you do, but I wish you luck and success in that. I thank you all. Pakistan Zindabad. कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन के ज़रिए तमाम एशिया रीजन कॉन्फ्रेंस का इजलास इस वक्त जारी है और अयाज सादिक इजलास से ख़िताब कर रहे थे। CPA कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रुकन ममालिक के तजर्बात से सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि पार्लिमान आवाम और रियासत के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है। मजीद बोले कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और जमहूरी इक़दार की मजबूती पर यकीन रखता है। पार्लिमान ही अवाम के हुकूक और जमहूरियत का असल मुहाफ़िज़ है। एशियाई ख़ित्ते को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन नागुज़ीर है। अयाज सादिक ने कहा कि जमहूरियत की मजबूती और अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका प्लेटफार्म्स नागुज़ीर हैं। इलाकाई ताउन और पार्लिमानी रवाबित के लिए कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है। अयाज सादिक ने कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम में पार्लिमान का अहम किरदार है। आज पार्लिमानी सफारतकारी कई ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। एतमाद, जिद्दत और नुमाइंदगी पार्लिमान के बुनियादी सतून होते हैं। सदर अयाज सादिक ने कहा कि तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान के तमाम सूबाई असम्बली के स्पीकर्स के साथ मुकम्मल ताउन और राब्ता रखा जा रहा है।